Welcome dear students. In today's topic we discuss about derive the equation for depression in freezing point. It is one of the most important colligative properties of the solution. First we discuss about what is freezing point. Temperature at which vapor pressure of liquid phase of solvent component equal to its vapor pressure of solid phase is known as freezing point. We know the freezing point of every solvent is different. Freezing point of water is equal to 273.15 Kelvin or 0 degree Celsius. We know that as the temperature decreases, vapor pressure of solution also decreases. As the temperature decreases, vapor pressure of solution also decreases. You can see in the diagram, dear students, you can see that if in a two different beaker, in a beaker A, hundred ml of H2O in the form of liquid is taken, and in another beaker B, in 100 ml of H2O, we dissolve 2 gram glucose. Dissolve 2 gram of glucose. Now, 100 ml of pure water has a vapor pressure equal to, consider 100 mm Hg. And as we know that due to the addition of non-volatile solute like glucose, it will get dissolved in a solution and uniform distribution of glucose is take place. This uniform distribution of glucose lower the vapor pressure of solution. Lower the vapor pressure of solution, and vapor pressure of such solution is lower and become a 90 mm Hg. Now, it was observed that by lowering the temperature, vapor pressure of solution also decreases. But as per the freezing point diagram, we lower the temperature until the vapor pressure of liquid phase is equal to its frozen phase. Vapor pressure of frozen phase or solvent phase. Now, based on that, it come to know that change in freezing point delta Tf is directly proportional to M, directly proportional to concentration of solute in solution. If we convert it, delta Tf is equal to Kf into M, where Kf is called as proportionality constant. We also know that
delta Kf and molality equation W2 into 1000 weight of solute into 1000 divided by molar mass of solute into weight of solvent in gram. Rearrange the equation. So M2 is equal to Kf W2 1000 divided by delta Tf into W1 in gram. By using this equation, we can able to calculate the molar mass of any unknown solute. Dear students, here you need to remember that delta Tf is equal to T naught F minus Tf, where T naught F is equal to freezing point of pure solvent. जो भी तुम्हारा प्योर सॉल्वेंट है उसका फ्रीजिंग पॉइंट. TF is equal to freezing point of solution. KF is equal to molar depression constant. Or also known as cryoscopic constant. Cryoscopic constant. W2 weight of solute and W1 weight of solvent. And as you know, M2 is equal to molar mass of solute. यहाँ पे ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट्स, जैसा हमने आगे डिस्कस किया, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी. सो डेल्टा टी एफ अगर प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट निकालेंगे तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम. वी नो दैट मोलालिटी इक्वेशन इज इक्वल टू डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ W2 इंटू 1000 divided by M2 into W1. Hence, rearrange the equation in terms of molar mass. So, M2 is equal to Kf W2 1000 divided by delta Tf into W1. Dear students, you also need to remember the fact that delta Tf is equal to Tf minus T naught F or T naught F minus Tf. Delta Tf is equal to T naught F minus Tf, where delta Tf is called as depression in freezing point, change in depression or depression in freezing point. हो गया. Now the graph based on this equation is also played a very important role. Now freezing point, depression in freezing point graph. In the examination, board examination, examiner may ask about this graph also. Now, as we know that the temperature, as we lower the temperature, vapor of pressure of the solution get decrease. So this graph is also about vapor pressure versus temperature plot. Temperature on x-axis and vapor pressure on y-axis. This line, which is represented by brown color, this represents the vapor pressure of solid phase of solvent. जो भी तुम्हारा सॉल्वेंट का सॉलिड फेज है उसके वेपर प्रेशर को रिप्रेजेंट करेगा फ्रोजन सॉल्वेंट का. नाउ एज वी डिस्कस अर्लियर, एट 298 to 300 Kelvin temperature, the vapor pressure of pure solvent
हमने कितना प्रिडिक्ट किया था? 100 mmHg। वेरी गुड। अब हम जैसे जैसे टेम्परेचर कम करेंगे, 300 से 290, 290 से 280 केल्विन की तरफ जाएंगे बराबर, तो उसकी वजह से क्या होगा? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कम होगा। तो जैसे जैसे हम कम करते जाएंगे तो उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। और एक टेम्परेचर ऐसा आ जाएगा जब उसका वेपर प्रेशर फ्रोजन सॉल्वेंट के वेपर फेस के जितना हो जाएगा, जो हमारा फ्रीजिंग पॉइंट का डेफिनेशन था। टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ हिज सॉलिड फेस। उसको एक्स्ट्रा प्लॉट कर लो आप। You will get that the temperature of pure solvent H2O, which is freezing point, is equal to 273 Kelvin temperature. T नॉट F कह देंगे इसको। नाउ सॉल्यूशन फेज में जब हम ले गए थे 100 ml H2O के अंदर हमने 2 ग्राम शुगर डाला तो सॉल्यूशन बना, तब उसका वेपर प्रेशर कितना हो गया था? 90 mmHg। तो इसको 90 mmHg से रखो। अब उसका भी टेम्परेचर क्या होने वाला है? डिक्रीज होगा। तो उसका टेम्परेचर कब डिक्रीज होगा? बराबर, इन ऑर्डर टू फ्रीज दैट सॉल्यूशन, तो उसके टेम्परेचर को भी हम फ्रीजिंग की वजह से डिक्रीज करेंगे। तो एज द टेम्परेचर डिक्रीज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन भी क्या होता जाएगा? डिक्रीज होता जाएगा। डिक्रीज करवाते जाओ। कब तक डिक्रीज होना है? जब तक उसका वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। वेपर प्रेशर ऑफ सॉलिड फेस के इक्विवेलेंट नहीं हो जाता। एक्स्ट्रा प्लॉट दैट इक्वेशन। इस तरफ आपको किसका मिलेगा? दिस इज समवेयर अराउंड 271 केल्विन टेम्परेचर। 271 केल्विन टेम्परेचर, एंड विच इज नथिंग बट फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन रिप्रेजेंटेड बाय TF। फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, and this change is called as delta TF. This change is called as delta TF. So hence it is proved that freezing point of solution is less than that of pure solvent। प्योर सॉल्वेंट से कम हो जाता है, एंड दैट्स वाई इट इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। डिप्रेशन यानी कम होना। दैट्स वाई दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। Depression in freezing point delta TF is directly proportional to concentration. So dear student, please try to answer these two questions based on this concept. Which of the following solution has a flowing solution has लोवेस्ट फ्रीजिंग पॉइंट? कौन से सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगा? ए 0.1 मोलार ग्लूकोज, बी 0.5 मोलार ग्लूकोज, सी 0.2 मोलार ग्लूकोज, and D 0.4 molar glucose. Give your answer in a comment section. Those students who give the right answer, I will display the name of such student in the next video. Likewise, question 2. Which of the following solution has highest freezing point? Highest
freezing point. A 0.05 molar urea, B 0.1 molar urea, C 0.2 molar urea, or D 0.5 molar urea. गिव योर आंसर इन अ कमेंट सेशन. जो भी बच्चे इसके अच्छे से आंसर देंगे, करेक्ट आंसर देंगे विथ प्रॉपर जस्टिफिकेशन, आई विल डिस्प्ले द नेम ऑफ सच स्टूडेंट इन अ नेक्स्ट वीडियो. एंजॉय योर स्टडी. टेक वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ. See you tomorrow at the same time with the next video. Okay.